Assalamu alaikum everybody. So after a long time, I'm again in my cubicle after 3 months and I'm feeling bit pleased. Allah करे सब चीजें ठीक हो जाए, normal हो जाए, so definitely we will enjoy in that situation more. Although we have resumed our the routine of going to university and I met all the colleagues today. I met uh, all the associated staff apart from faculty members, and I'm feeling very happy to see all of them happy, and most of the people, and everybody is fine, and everybody's family members are fine. Alhamdulillah, 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 except one or two occasional cases that Allah करे कि वो लोग भी ठीक हो जाएं. There were two or three exceptions. I've got information from some one or two PMs that there were some patients in their remote uh, villages and their distant cousins and this and that. So अल्लाह करे कि जैसे अभी हम फील कर रहे हैं कि everything is okay, everything has been resumed as it was in the past, but still the situation outside is not good. Everybody can see. If I switch on to the television just now, I will definitely be sad. So क्या करें? We cannot escape reality. So that is a very good sign. After all, that is for our motivation. At least we have controlled the depression to a great extent after coming here. So inshallah, we have resumed work. Some other universities have resumed work. Some people have opened their shop. So inshallah, Allah will do something very good for us in the coming weeks and this. Um, what we are expecting and we are praying for. Inshallah, Allah will grant our prayers and everything would be okay. And that time we will be enjoying. And I'm waiting for the day when you all people would be here in my cubicle to see me and we will, inshallah, meet here in the university. So today is our last class. For me, it's last, although we have already covered 16 sessions. So I wanted to um, teach you something about proofreading skills. So it is why I'm here. So inshallah, we will continue with these type of session. If you want, whenever you are, you want to ask anything, whenever you want to discuss anything, I'm always available round the clock. Even if I'm not available here at Zoom meeting, you can call me anytime. And we have Facebook page, we have WhatsApp group. Even people want to discuss so many things. We will have every day a new session because I will be coming to university for 5 days now from 8:30 to 4:30, and we will definitely 4:30 से तो ऊपर हो ही जाता है टाइम बैठे बैठे चाय वाय पीते जाते तो हम वो मीटिंग्स रख सकते हैं. अब आज का रिजल्ट देखो अल्लाह करे अच्छा हो, वरना ये अच्छा नहीं हुआ तो फिर मैं क्लासरूम खुलवा के ना तो उसमें कर लूंगा ताकि डिस्टर्बेंस ना होगा क्योंकि हमारे पास एंट्री है. So I can rely on that. So hopefully you will be listening to my voice only, and the other sounds, disturbing sound, will be in background. So today we will study proofreading skills. Clear? G. What is proofreading? Proofreading is the process of comparing a copy on screen or paper to the original copy and marking errors to be corrected. When we say proof, actually the meaning of proofreading is we leave proof on the page. एक तो होता है ना देखा आपने या हाँ इसमें ये चेंजेस कर लेंगे. No, that is not proofreading. You have to check each and every word, each and every line. You have to check spelling mistakes, grammar mistakes, uh, uh, diction and decorum in some special cases, not in every text. And you have to correct there, or you have to make a sign or symbol there, and then you have to put the details against that sign at any rough page. Whether you are doing work on a soft copy or a hard copy, you have to make correction. You have to give substitute whenever you think that word is not suitable here. You must give a substitute.
If you think that is this sentence is the wrong sentence, so what could be the correction in that sentence? So if that is lengthy, or you may think that it would be complicated, or it will just destroy the overall text on the page. So you can use any other page. You can put the symbol there, and the person will definitely see the details against that very symbol or mark. That is called proofreading marks or proofreaders marks. So you have, this is why we call it proofreading, because you have proofs, you have written proofs. Whenever there is any problem, you can check the uh, initial document and the corrected document and the proofread document. So you can have a file in all the documents that the initial draft was that, then we change it into that, and then we change it or revised it into that with the passage of time. So proofreading marks are symbols that are used to mark corrections and changes to a document. Proofreader marks are found on the rough draft of a document. वही मैंने बताया ना, एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं या बाद में आप ऊपर भी लिख लेते हैं, और बाद में आप सिंबल दे देते हैं या 1 2 3 कर देते हैं, उसके बाद आप डिटेल उसकी 1 के आगे ये, 2 के आगे ये, 3 के आगे ये, या वो सिंबल दे देते हैं. अभी मैं आपको शो करता हूँ, ये देखें, दीज आर द सिंबल्स और मार्क्स. अच्छी तरह देखेंगे. Capitalize, close up, delete, insert comma, insert space, insert apostrophe, insert period, insert quotation marks, move right, move left, move down, move up, center, lowercase, paragraph, no new paragraph, align copy, spell out or misspelled, transpose, replace, let it stand, ignore, correction, this and that. Look at it completely. Try to understand each and everything. So now there would be a written proof. Especially the proofreading is very much significant in meetings, in official documents, in newspaper media, because any wrong information, even any derogatory word or expression, can create an upheaval in the society or in the country. And then you have to prove that who was the editor, who was the sub editor, who edited that page, who allowed that text to be published directly. So you must have a proof of your correction. That initial draft was that. When it came to me, I made these changes, and I want each and every person of using that words or that sentences according to the situation in the society, or it has some uh, religious interpretations, social interpretations, racial interpretation, ethnic or lingual biasness, or this and that. So you must replace that word. इस तरह प्रूफ रीडिंग में आपको हर चीज का रिकॉर्ड देना पड़ता है, हर चीज तो उसकी बार बार प्रूफ रीडिंग. ये नहीं है कि छोटा आपने मुझे कोई दिया, ये लेटर में लिख रहे हो, दोस्तों चेक कर देना इंग्लिश, हाँ बस ठीक है, कर दे वो. When we talk about official proofreading, that is a very delicate and subtle activity. Not only activity, a responsibility, I must say. Proofreading steps. Use your word processor, spell check, and grammar check. That is very common. Even children can do that. But remember, most of the people make mistakes on the basis of using these type of the word processors and spell check. सर मैंने तो उस पर चेक किया था, बिल्कुल सही है, और सत्यानाश किया होता सेंटेंसेस का, टेंसेस का. Because computer grammar check or spell check is the software that cannot think, that has already installed version, installed answer to every question. He didn't know what you actually wanted to write, what you actually wanted to convey. He didn't know that. The problem is you are very much satisfied with that software, and you put forward every letter, every text to the masses or the meeting or wherever you wanted to convey it to. So it creates problems. तो ये तो एक इनिशियल सी चीज है, इसको कर लिया, ये चीज पूरी नहीं है, इस पे रिलाय कभी ना करना.
Normally, we have American softwares. And when we talk about English, English is the British English, and British English. Proofread the soft copy. ठीक है? Proofread the hard copy. Like with so many people, including me, there is a problem. I check so many, I make corrections, I find out so many mistakes in soft copy of my text. But when I get a printout, I check the hard copy draft, I come to know that there are further mistakes that were unknown to me hitherto, or that were missed by my senses. सॉफ्ट कॉपी में बहुत सी चीजें आपको ऑन स्क्रीन नजर नहीं आती, तो हार्ड कॉपी लाजमी, इसलिए most of the people prefer to have a hard copy of the rough draft and then they made it clean. वो उसको लाइन लगाते रहे, टिक किया पेंसिल से या किससे, एक एक वर्ड पढ़ा। मैं भी अराउंड कैसे हो जाता है, स्क्रीन पे बहुत से वर्ड्स मिस हो जाते हैं, बहुत सी मिस्टेक्स जो हैं वो मिस हो जाती हैं। स्विच विद अ पार्टनर, दैट इज अनदर थिंग। You have checked a draft or a text, piece of text, maybe a portion of a book or a chapter. I have checked another chapter. Now we will switch over our text or our copies. You will recheck my text and I will recheck your text or your chapter, because there are certain mistakes that are not noticed by an individual or maybe noticed by another individual, because everybody has some limitations, everybody has some drawbacks. A man is not perfect. बहुत सी चीजें हैं मैंने सही कर दी, आप स्टूडेंट हैं, आपने कहा सर आपने ये तो चेक किया ही नहीं, ये तो गलत था, तो मैं टीचर होकर भी गलत कर सकता हूँ। तो आपसे एक दफा दिखाने में कि आप भी देख लो एक बार, कोई चीज मुझसे रह गई हो, कुछ भी हो सकता है इंसान से। तो पीयर चेकिंग में यू हैव अ बेटर ओपिनियन, यू हैव अ बेटर रिजल्ट। ठीक है? Edit your document. Now you edit. Definitely, you will not send the document as it is with corrections, with symbols, with all the marks, with all the cuttings, with all the omissions, with all the additions. You will make a new draft, because definitely now we use computer, so we have already saved file. We can make changes where we want, and then we have another printout. Or sometimes we come to know, oh still ये दो कोमे तो रह गए, ये फुल स्टॉप, और फिर तीसरा ड्राफ्ट निकालो, चौथा ड्राफ्ट निकालो, फिर जाके कहीं सही होती है बात। It happens, often happens. So when you edit your document, again you revise that sometime. But if it is okay in the very first attempt, you have the first printout, okay, then you are really very lucky. You have saved your toner, you have saved your pages. Otherwise, ऐसा होता नहीं है. Step 1, use spell check. Spell check is a word processing feature that checks your document for incorrectly spelled words. It checks every word in your document against an electronic dictionary and identifies any words that it doesn't recognize. Most of the times, it has a changed spelling. Windows always have American dictionaries automatically installed in Microsoft Words. So if you write the correct spelling of eyes, like channelize, operationalize, officialize, realize, ISC, it marks that incorrect words. So far as British English is concerned, it marks IZE as incorrect. So there are so many other words that have mostly uh, when we write OUR, like in behavior, in color, uh, in endeavor, or all other words. Americans use only O without U. So it will give different type of correction. You may misunderstand, you may spoil your original draft if you rely on an American dictionary.
So there is a software. A software is a software that is only for initial check, so that the labor must be lessened. कि आप डिपेंड नहीं कर सकते, चलो थोड़ी सी मेहनत से कर दी बाकी कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे आप एक किसी भी चीज को धोते वक्त आप पानी में सर्फ में भिगो देते हैं, लेकिन बाकी चीजें दाग वाग आपको धोने पड़ती है, सब कुछ तो करना ही पड़ता है ना, वो अपने आप नहीं हो जाता बाल्टी में भिगोने से। तो ये है कि शुरू शुरू में आपको बस वो जो मेन मेन चीजें थी मिट्टी पर सर्फ से निकाला साबुन, उसके बाद जहाँ जहाँ कोई स्पॉट्स है वो आपने करने। तो ये फायदा है बस इसका इनिशियल चेक का, जो आप कंप्यूटर से करते हैं। विल स्पेल चेक फाइंड ऑल कीइंग एरर्स? नो, वही बात आ गई ना। स्पेल चेक विल नॉट फाइंड homonyms. Homonyms क्या है? Homonyms are the words that sound the same but have different meanings. For examples, to, two, and two. Your and your, there, and there. Names and addresses that are not in the computer's dictionary. You have misspelled Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Faisalabad. Dictionary will not tell you what are the exact spelling according to the official spelling of that city, that university, that mohalla, that address, even the people's names. And in documents, these spellings are very much sensitive and important. Omitted words, the words that have been left out but are needed in order to make a sentence make sense. वो जो आप इंटोनेशन बनाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बनाते हैं, सॉरी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप जैसे डोंट, कांट, हैवंट, वांट, इसमें आप अगर वो अपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं लगाते ऊपर, तो आपको सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये देयर का है, जैसे देयर, दे आर को देयर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और यू आर को यू आर लिखा है, इसमें से अगर आप ये कॉमा हटा देंगे तो मिसस्पेल हो जाएगा सारा कुछ। ये बेसिकली यहाँ पे ओमिट किया हुआ है, ए इज ओमिटेड। ये जो कॉमा है ऊपर, दैट शोज दैट वन लेटर इज ओमिटेड हियर, ए इज ओमिटेड, दे आर का भी आर इज ओमिटेड। पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन एरर्स, कहाँ कॉमा आना है, कहाँ कॉलन आना है, कहाँ सेमी कॉलन आना है, कहाँ कैपिटलाइजेशन होनी है, कहाँ से नया सेंटेंस शुरू करना है, कौन से सेंटेंसेस को फ्यूजन में लाना था, कौन सी फ्रेगमेंटेशन हो गई है, कौन सी इलॉजिकल फ्यूजन हो गई है, कौन से रन ऑन सेंटेंसेस हो गए हैं, ये चीजें आपको पढ़ाई हुई है पहले। देन स्पेसिंग एरर्स, स्पेस कितनी देनी थी between the lines, between the words, where to use dash. And there are certain intellectual pattern, diction and decorum. When you are a grown-up person, you are a university student, people definitely expect uh, a reasonable level of English, of diction and decorum in writing, that you must form these type of sentences, these type of paragraphing, these type of textual fragmentation, fusion, this and that. Where sometimes you have to use satire, you have to use figurative meaning, metaphorical expressions. So computer dictionary cannot detect them. You have to feel the sense of these words. Initially, you may find these words wrongly used there. But when you use your brain, or you have an understanding of English language, you will definitely come to know that these words are used here in a figurative meaning or as a metaphoric expression. अपनी एक्चुअल मीनिंग में नहीं होते वो। स्पेस की एरर्स, कहाँ कितनी स्पेस देनी है, इट्स अप टू योर डॉक्यूमेंटेशन पैटर्न। क्लियर?
The next is use grammar check. Grammar check is a word processing feature that checks your document for grammatical errors. Again, that is initial checkup. बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर ने कहा हाँ, यहाँ लगा ये लगा हाँ बस असल टेस्ट तो वो जी वो रिपोर्ट आएगी तो तब पता चलेगा। इनिशियली लगता है कुछ नहीं है, हार्ट सही है ये सही, फिर भी वो कहता है ब्लड टेस्ट करवाओ, ये वाले एक्सरेज करवाओ, ये एमआरआई कराओ, ये कराओ। तो ये इनिशियल टेस्ट है ग्रामर का टेस्ट जो आप व्हेन यू रिलाई ऑन कंप्यूटर डिक्शनरी or computer grammar softwares. Use grammar check to find incorrect use of homonyms. Homonyms, pair of words भी जिन्हें आप कहते हैं, जो वर्ड आपको कंफ्यूज कर देते हैं, डिफरेंट होती हैं लेकिन साउंड्स एक जैसी होती हैं। सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, आई सॉ अ कैट वॉकिंग ऑन द वॉल, मैंने एक बिल्ली को दीवार पे चलते हुए देखा। आई सॉ वॉकिंग ऑन द वॉल अ कैट, ये गलत हो गया। इसका मतलब मैं जब मैंने बिल्ली को देखा तो मैं वॉल पे चल रहा था। सो आई सॉ अ कैट, वॉक कैट कर रही थी तो वॉकिंग उस कैट के साथ आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसे कहते हैं। आपको पूरा फ्यूजन और रन ऑन सेगमेंट्स में और फ्रेगमेंटेशन में पढ़ाया था। Grammatical errors found by grammar check can be identified by green squiggly lines under words, phrases, वो जो underline कर देता है। But still, that is not right to depend on that fully. Again, I'm telling you. If you are writing an American English, you may find it helpful to a greater extent, but still that is not 100% correct. वो ह्यूमन माइंड जो सोचता है बहुत चीजें कि यहाँ पे ही आना है, वो नहीं सोचता कंप्यूटर। बहुत से डॉक्यूमेंट्स इस हद तक बुरे देखे मैंने आर्टिकल, कुछ चीजें जब मैं मुझे एडिटिंग के लिए मेरे पास आती हैं लीडिंग न्यूज़पेपर्स की तरफ से, तो वो लोग कहते हैं जी हमने तो पूरा चेक करके इसको कंप्यूटर में भेजा। मैंने कहा भाई कंप्यूटर पे चेक किया था ना, ये सत्यानाश किया हुआ है। तो लिखना चाह रहा है ये सेंस कुछ और दे रहा है, तो लिखना कुछ और चाह रहा है। अब कंप्यूटर को ये तो नहीं पता तो क्या लिखना चाह रहा है। Although very helpful, grammar check may not find all grammatical errors. You still need to proofread proofread your document to make sure that it makes sense। ये बात आ गई। कंप्यूटर ये तो नहीं चेक कर सकता कहाँ आपने तंज करना है, कहाँ आपने दुआ देनी है, कहाँ आपने क्वेश्चन देना, कहाँ आपने जोर देना है, कौन सी बात आपने किस तरह करनी है। दैट इज अ पार्ट ऑफ decorum and diction, syntax। Proofread the soft copy next. Read the copy on the screen slowly, word by word. Still, मैं बता रहा हूँ ना, most of the people miss so many mistakes when they go through the soft copy, when they read anything on screen. Proofread for meaning, things to look for, the spelling of names and addresses, number and capitalization errors। 1 2 3 के बाद 5 आ गया, 4 है ही नहीं, तो वो पॉइंट टोटली 4 थे, 5 नहीं थे, बंदा ढूंढता फिर 5वां पॉइंट कौन सा, तो पता चलेगा वो प्रॉब्लम हो गई थी, थे 4 ही। तो इस तरह बहुत सी चीजें समटाइम्स you are giving instructions, the first step is this, second is this, third is this, fourth is this। थर्ड मिस हो गया तो फोर्थ करने से हो सकता है तो मशीन ही तबाह हो जाए। अगर वो कोई टेक्निकल चीज है, जहाज कैसे उड़ाना है, टेक्सटाइल मशीनरी कैसे ऑपरेट करनी है, कोई सिस्टम पावर स्टेशन किस तरह चलाना है, फर्स्ट स्विच ऑन दैट बटन, देन कनेक्ट इट विद दैट वायर, देन स्विच ऑन टू दैट वायर, देन इट दिस। वो एक भी स्टेप हो गया तो कबाड़ा हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों को आपने चेक करना होता है कि स्टेप सही है
1 2 3 सही जा रहा है, ABCD सही आ रहा है. Spacing and punctuation errors. That is a very common problem with not only the student but even some teachers also, I must say, including me. They make mistakes in punctuation because most of the time nowadays we are in hurry. Whenever we are writing, we are typing, especially when we are writing for a specific purpose. I mean, literary writings or academic compositions. We must be very careful about these things because punctuations mistakes can create confusion in the meaning of the whole text. A punctuation mistake is not only a mistake, it can turn the whole communication otherwise. आपके वो मीनिंग ही बदल जाते हैं. कॉमा यहाँ से यहाँ हो गया तो. Proofread the hard copy. Proofread your document again after printing it. There may be errors that you find on the printed copy that were missed on the screen. Proofread for meaning. That is the actual, and still it's conveying a proper meaning. But you must know whether that is the meaning you want to convey. When I take who is going to Lahore, who is going to Lahore, there is a difference between these two sentences. And the third one is who is going to Lahore. All the three sentences convey different expressions, senses, and even meaning. So where to pause, where to give space, where to bifurcate with comma, semicolon, colon, or full stop, and where to use capitalization, which word should be capitalized, which word should be in inverted commas, like quotations, which word must be used in brackets or parentheses. पॉसिबल फॉर्मेटिंग एंड अलाइनमेंट एरर्स. ये तो आप लोग तो खैर इसकी परवाह ही नहीं ना करते. असाइनमेंट्स जो आती हैं वो A4 साइज पे मुझे एक असाइनमेंट मिली है 38 फॉन्ट में. एक एक लाइन में 3 3 वर्ड हैं. वो छापी हुई है, मुझे पता है, गूगल से उठा के वो भर दी है पूरी वैसे की वैसी. अल्लाह रहम करे आप लोगों पे. खैर, तो अलाइनमेंट और पॉसिबल फॉर्मेटिंग जो है वो ये है कि बाज़ का आपको लगता है कि ये पैरा इसकी कंटिन्यूएशन में है, यहाँ पे आपने खामा में पैरा तोड़ दिया जो ब्रेक नहीं होना चाहिए था. That text or that these sentences must be a part of this portion, these sentences. There must not be a new paragraph, or there must be a new paragraph when you have mixed more than 20 30 sentences and there were two different topics that were being discussed. When you have a new idea, a new thought, you start a new paragraph. Normally we do that. So sometimes we think there is some extra information that must not be required. तो आप उसको शॉर्ट कर देते हैं, कभी ऐड कर देते हैं. बहुत सी चीजें होती हैं. फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है. फॉर्मेटिंग से भी मीनिंग चेंज हो जाती है. एक चीज आपने यहाँ लिखी, दरमियान में और चीज लिखी, थर्ड पैराग्राफ में इससे रिलेटेड पहले से तीसरे में लिख दी, तो वो मीनिंग कन्वे सही होगा ही नहीं, वो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी. Switch with the partner. Peer editing is when someone else proofreads your work with you. Now you have done your job, he has done his job, or she has done her job. Now change your text because there must be some errors that have been ignored by you in the same way that person might have ignored 5, 4, 5, 6, 7, 8 grammatical mistakes. You can point out them, or he can point out in that draft that was missing. You didn't notice that there was something out of track here.
Allowing someone else to review your work can be helpful because your partner may find errors that you missed. बताया ना, everybody is a human being. Your partner may offer helpful suggestions to improve your document. Everybody has a universe inside him. When he thinks, he imagines about things. He uses his creative mind. He has fantasies. He has imaginative flights. He may be a very good poet. So he will definitely give you some more impressive words to convey your thought. Clear? तो ऐसे तो नहीं कहते एक बंदा अकेला होता है और दो 11 होते हैं, दीवार से ही मशवरा कर लिया करे यार किसी से ना, कहते हैं ना लोग. बिकॉज जब इंसान अकेला फैसला करता है तो वो उतने बेहतर नहीं होते जितना आप किसी से पूछ लेते हैं पहले. Edit your document. Editing is the process of correcting or making changes to a document. First, you highlight that. You come to know, or you suddenly any mistake strikes your mind. अरे 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 रुकना, ये यहाँ पे गलत है. ठीक है. Now you have recognized that. You have come to know there is something missing or there is extra addition that must be omitted. Then you make it correct. Then you think on the solution, that is the problem and that is the solution. I must add some new words or I must omit these 4 words or my sentence would be more impressive one after omitting these words or after adding these words or this and that. ये ज्यादा अच्छा लगता है. बड़े को लिख रहा हूँ, छोटे को लिख रहा हूँ, क्या करेक्शन हो गई, चेंजेस कर दी उसके ऊपर आपने. ये सारा प्रोसेस एडिटिंग का है. एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में ये फर्क है. प्रूफ रीड तो आपको रफ ऊपर लिख देगा. आपने मुझसे प्रूफ रीडिंग करवाई, मैंने मिस्टेक्स बना दी. अब एक्चुअल ड्राफ्ट में आपने जब टाइपिंग में चेंजेस किए, एडिट आपने करना है. नया ड्राफ्ट जो बनाना है वो मैंने नहीं करना. जब आप खुद करते हैं कि प्रिंट आउट लिया फिर मिस्टेक की, फिर तो आप प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग दोनों कर रहे हो. एडिटिंग इंक्लूड्स करेक्टिंग एरर्स, updating a document to make it visually appealing. Apart from correct grammar, there are certain aspects of writing that can make your writing more expressive, more impressive, or less expressive, or less impressive. You can say, today weather is very pleasant. ठीक है, यही बात आप इस तरह एक शायर किस तरह कहेगा. Today the weather is surely fascinating with charming black clouds and the melodious voices of drizzling with tickling of sprinkling drops of water from the heaven on my face or this and that. तो कुछ ज्यादा ही हो गया. Anyways, तो कुछ चीजें अपीलिंग लगती हैं. आप किसी की ताजियत कर रहे हैं कि अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, वो फातिहा के लिए आए थे, आपका भाई मर गया. अच्छा जी, एक होता है तो नहीं, में दुख हुआ. That's a part of life. We are with you. How can we share your feelings now? How can we help you? How can we help your family in this type of critical situation? We are siding with you. We have already experienced that type of the losses of the dear ones in our life. We can understand. We can feel your sorrow, your shock, your bereavement, your deprivation. तो हम अकेले ना समझना अपने आप को, हम हैं तुम्हारे साथ. उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस सारी सिचुएशन में हमारे लाइक को कितना तो हमें बताओ. तो वो बंदे का हौसला जरा बढ़ गया. बंदा तो किसी का वापस नहीं आता, क्योंकि किसी की आप somebody is very
what you can say, is the victim of a fatal disease, and he is at the last stage of any type of cancer or other these type of the disease, and he is admitted into the hospital. You go to that person. Everybody, everything depends upon the Almighty and the doctors who are treating that person. You cannot do anything. You cannot make miracle with that person. But what you can do, आप उसका मोराल हाई करते हैं, जिसे कहते हैं ना मोराल हाई कर देना. You make that person feel motivated, important, and nearer to life, closer to life. नहीं इंशाल्लाह ताला तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब दुआएं कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और आज तुम पहले से बहुत बेहतर लग रहे हो, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे. लोग मिलने आते हैं, बंदा थोड़ा तकलीफ भूल जाता है, वो जो आखिरी स्टेज है उसकी वो इजी निकल जाती है आप जब जाते हैं. तो ये आपके वर्ड्स होते हैं जो मैटर करते हैं. मीन्स के in which type of the situation, what type of the words and writing pattern or verbal patterns must be used. That is an art. Visually appealing के appealing भी लगे. तो खैर मैंने आपको बताया कि वर्ड्स में बड़ी जान होती है. बाज़ औक़ात आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी को थपकी भी देते हैं, आपके वर्ड्स ऐसे होते हैं कि दूसरा बंदा उस चीज से निकल आता है, उस क्राइसिस से. Thank you very much. So I'm available for question answer sessions. Okay. We will have class inshallah on the next question answer session on Thursday at 8:30. I'll be live from my this cubicle on 8:30 inshallah on Tuesday. Clear? And now I hope you will be preparing for the examination, and examination would be an online examination for the very first time for you, for me also, and for so many people living in Pakistan who are students or teachers or directly or indirectly associated with uh, educational programs. Feel free to ask any question. We will discuss it inshallah ta'ala. Stay blessed. During that span of time, if you want to ask any question, you have my number, you have WhatsApp group, you have Facebook group, you have Google Classroom. ठीक है. अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो. अल्लाह हाफिज.